Welcome everyone, I am Dr. Manoj Kumar Sharma, Associate Professor, ITS College of Pharmacy, Muradnagar. This is lecture number 14 and this is the part 4 of the topic probability. The subject is biostatistics and research methodology. The code is BP 801T and the course is Bachelor in Pharmacy and University is Dr. APJ Abdul Kalam Technical University. In this lecture, I will cover these 3 points: sampling, need of sampling and types of sampling. So, before go to understand sampling, we first understand what is the sample. Is it possible to work out of 50 million people think by asking only 1000? So, the answer is yes. So, that is as in the similar manner, if we want to find the presence of the plasmodium in a person blood, we take a small part to diagnose is plasmodium present or not. So, is it possible to test the presence of the plasmodium in a small drop of blood? You could say yes. The small group which have chosen for study, this is called sample, and if you were to survey everybody, then it is called a census, but it generally it is not possible to observe all the everybody in a population. So, census is generally not possible in all condition. Now, what is sampling? Sampling is a procedure by which some members of a given population are selected as representatives of the entire population. It is important to understand how representative a sample is of the population before statistical analysis, because for good result the sample should be the representative of the population. So, to draw a sample from a population, the procedure is called sampling. So, what is the need of sampling? The question is, what is the need of sampling? The need of sampling, as I told you that in the census, it is not possible to cover everybody. So, we need sample. जैसे मैं अभी एक एग्जाम्पल आपके सामने लेते हैं, हम ये टेस्ट करना चाहते हैं, अभी मैंने लिया था, वी वांट टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मोडियम इन ए पर्सन. ओके, तो वी हैव टू वे. फर्स्ट क्या है, हम उस पर्सन का टोटल ब्लड बाहर निकालें और फिर उसमें टेस्ट करें कि उसमें प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है या नहीं, और 2 या 3 दिन बाद उस पेशेंट के जो रिलेटिव्स हैं उनको बताएं कि प्लाज्मोडियम प्रेजेंट नहीं है. तो आई थिंक इट इज नॉट पॉसिबल. द अनदर वे कि वी टेक 2 or 3 ml ऑफ ब्लड फ्रॉम दैट पर्सन एंड टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मोडियम. इट इज द राइट वे. सो दिस इज द वन मेन रीजन ऑफ द सैम्पलिंग, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू observe all the population in some condition. These are the main reason of the sampling. Second, अगर आप किसी लार्ज एरिया पर कोई स्टडी करना चाहते हैं, तो यू नीड more time to ask the question for the survey for large population, and also it will increase the cost of the study. Also it will increase the time to complete the study. Okay. So, these are the reason for sampling, because our aim is in any research study we may want to minimize the cost, we maximize the speed of the study, and we also want increase the accuracy of the study.
अगर आप बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस को ऑब्जर्व करते हैं, मैनुअली करते हैं, तो हम देखते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ एरर्स आ जाती हैं। ऑब्जर्विंग एरर हो सकती है, राइटिंग एरर हो सकती है, तो उससे क्या होगा, एक्यूरेसी कम हो जाएगी। तो अगर आप ज़्यादा एरिया कवर करेंगे, ज़्यादा लोगों को किसी पॉपुलेशन में ऑब्जर्व करेंगे, कोई स्टडी करेंगे या फिर सर्वे स्टडी जैसे है, तो उस केस में आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, मनी ज़्यादा लगेगी, एक्यूरेसी कम हो जाएगी, प्रिसीजन कम हो जाएगा। तो ये सब को ओवरकम करने के लिए हम सैम्पलिंग करते हैं। नाउ दीज आर सम टर्मिनोलॉजी। द पर्सन हु डू वांट टू जनरेट टू is known as the theoretical population, and the what population can you get access for study is known as the study population, and how can you get access to them, this is called sampling frame, and who is in your study, the वो लोग जो आपकी स्टडी में लिए जाएंगे, जिन पर आप रिसर्च करेंगे, these are called sample. So, we see that the sample is a subset of study population, and study population is the subset of theoretical population. And how we do generalize the result? Because we to generalize the result, we take a sample from the population and do the study on the sample and get the results, and after the take result we generalize the result for population. We generalize the result for population. For example, हम कोविड का एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोवैक्सीन का। पहले हमने एक स्मॉल पार्ट के लोगों पर कोवैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल किया, वहाँ से हमने देखा कि ये जो कोवैक्सीन है ये हमारे लिए कोरोना को रोकने में मदद कर रही है, दिस इज द रिजल्ट। अब इस रिजल्ट को हमने टोटल इंडिया की पॉपुलेशन के लिए जनरलाइज कर दिया या वर्ल्ड की पॉपुलेशन के लिए जनरलाइज कर दिया कि कोवैक्सीन सभी को लगाया जा सकता है। सो दिस इज कॉल्ड जनरलाइजेशन। नाउ टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग आर टू टाइप्स, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. Probability sampling further divided in 4 types: simple random sampling, stratified sampling, cluster sampling and systematic sampling. Non probability sampling is convenience sampling and quota sampling. Non probability sampling, in no a probability is attaching in selecting a manner. That means, in this we cannot calculate the probability to select a person in our study from a population, while in probability of sampling each member of the population has a non probability being selected. पहले केस में क्या है कि हमें उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं पता, कितने परसेंट चांस हैं किसी मेंबर के सैंपल में सेलेक्ट होने के, जबकि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ईच member of the population has known probability of being selected. Okay? But probability sampling does not guarantee representativeness, but allows assessment of sampling error, because for a good result it is the essential the sample should be the representative of the population. That means, all the characteristics of the population should be present in the sample, and the probability sampling reduce possibility of selection of bias. Also, it allows the application of statistical theory to results. Now, first is simple random sampling. In simple random sampling, the principle is the equal chance of drawing each unit. Random means everybody have equal chance to select in a sample. It is not at random. This is random means everybody have equal chance to select in the sample. In this sampling, we select the
sample with the help of random number tables. In this we first prepare a list of the population, and with the help of random number of table we select our sample. The merits of this sampling is it is easy to implement if list frame available or small population. Second, approximately satisfy the sampling model on which conventional statistics is based. So, we can carry out complex analysis, but there are two demerits. In the simple random sampling, it need complete list of units, because to select the sample we should have a complete list of the all the subjects or patients or units of the population. And second, units may be scattered. So, it is very tough to prepare a complete list of the units. So, it is the these two are the demerits of the simple random sampling. I explain to simple random sampling with this example. We want to evaluate the prevalence of tooth decay among 1200 children attending a school. We want to find evaluate the prevalence of tooth decay among 1200 children attending a school, and to do this we first prepare a list of school attending children, and we numbered them from number 1, number 2, number 3, number 4 up to 1200, and for this study its sample size is 100. Now, we want to select 100 children from the class, and the class have or school have 1200 children. The random sampling of 100 numbers between 1 and 1200. अब हमें क्या करना है कि हमें 1 से 1200 के जो नंबर्स हैं उसमें से कोई 100 चिल्ड्रन को सिलेक्ट करना है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हाउ डू रैंडमली सेलेक्ट. तो रैंडम सेलेक्ट कैसे करेंगे, मान लो सपोज करो आपका आ गया 20 या नेक्स्ट आ गया ये, तो अब ये 20 आया नंबर वाला हमने पेशेंट ले लिया हेलेन, या 40 वाला एलेन ले लिया, ये रैंडमली नहीं लिया, इसको हमने रैंडम नंबर टेबल की हेल्प से सेलेक्ट किया. कैसे, या सपोज करो हमने 29 या जेलेस डी को सेलेक्ट कर लिया, तो ये आप एट रैंडम नहीं कर रहे हैं, दीज आर सेलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ रैंडम नंबर. कैसे देखिए, या नेक्स्ट एक और आपने मान लो 27 ले लिया, तो ये रैंडमली सेलेक्ट नहीं है, इसके लिए हम इन रैंडम नंबर टेबल्स का यूज कर रहे हैं. In random number tables, there are so many random number tables, and now there are many softwares which have random numbers and they select the sample. This table contains some random numbers. So, in random numbers we can start from any column and from any row. This is our independence, but after the selecting the first case we should continuously move from top to bottom. For example, we start from here and the number is 9,05,387, but we have only 1 to 1200 numbers. So, to select our sample, क्योंकि हमारे नंबर 1 से 1200 तक है, तो हम केवल अब इसमें नंबर्स हैं 5 डिजिट में 9,05,387, तो हमें केवल लास्ट की 4 डिजिट देखनी है और वो डिजिट जो हमारी इसमें आ जाएगी उसी नंबर का हम सेलेक्ट कर लेंगे. तो जैसे सबसे पहले है 9,500,387 से हमने स्टार्ट किया, ये हमारी इंडिपेंडेंस है, हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट अब हम कंटिन्यूसली मूव करेंगे ऊपर से नीचे. तो पहले नंबर आया, सपोज करो ये आपका आया 2,397, तो इसको आप सेलेक्ट नहीं करेंगे. नेक्स्ट है फिर 5,243, ये भी हम सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये भी हमारा 1200 से ज़्यादा है. नेक्स्ट इज 2,05,405, इसे भी सेलेक्ट नहीं करेंगे. नेक्स्ट इज
इसमें आप सबसे पहले आप देखिए, आपने करा 9,5,387, नेक्स्ट इज 4,08,125, नेक्स्ट इज 6,08,149। तो ऑल आर नंबर्स को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये सारी नंबर्स आपकी 1200 से ज़्यादा हैं। द नेक्स्ट नंबर इज 1161, इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसको सेलेक्ट क्यों कर लेंगे? क्योंकि ये नंबर आपकी 1200 में है। तो इस हमारा पहला सैंपल जो सेलेक्ट होगा वो स्टूडेंट होगा जिसका रोल नंबर 1161 है। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट में जाएंगे। अब वो नेक्स्ट नंबर भी हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्यों? उसको भी हम कैंसिल कर देंगे। वो हमारा आ रहा है 3,07,484। उसके बाद उसकी नेक्स्ट नंबर देखेंगे, फिर नेक्स्ट नंबर देखेंगे और तब तक चलते जाएंगे। अब नेक्स्ट लास्ट में हमारे इसमें से कोई सिलेक्ट नहीं हो रहा तो दूसरी डायरेक्शन में ऊपर जाएंगे और तब तक नीचे से ऊपर चलते रहेंगे जब तक हमारा अपना नंबर नहीं आएगा, और इस तरह से हम दूसरा सैंपल सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से आप 1200 चिल्ड्रन को सेलेक्ट करेंगे सैंपल में, इस नंबर टेबल के हिसाब से। ये सब कैंसिल हो जाएंगे, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, ये नंबर सेलेक्ट हो जाएगा, कम है। फिर नीचे से ऊपर मूव करेंगे और इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे आप अपने 1200 चिल्ड्रन। सेकंड है सिस्टमेटिक सैंपलिंग। सिस्टमेटिक सैंपलिंग स्प्रेड्स sample through a list of population members. In nearly all practice examples, the procedure results in a sample equivalent to simple random sampling. It is used when objects are in run. In this sampling, we first calculate a sampling interval and the sampling interval equal to the population size upon sample size. So, how we choose? I explain with the help of example. As in previous example, the population size is 1200, and if we here we want to select 60 children from 1200 children. So, the sample size is 60 and the population size capital N is 1200. So, first we calculate here the sampling interval. The sampling interval equal to the population size upon sample size. Sampling interval is population size upon sample size. And the population size is 1200 and the sample size is 60. So, the sampling interval equal to 20. This the sampling interval is 20. Now, we have the list of children or person from 1 to 1200 and we want to select 60 person from these 1200. So, to start this we first select any number of children, any number of person from a study. And for example, if we select 20, then the next will be 20 plus 8, 28. And for example, if we select 8 and after the 20 sampling interval, this will be 28 and next is 48 and so on. We select the 60 children from this 1200. So, this is systematic sampling. Another is stratified sampling. In stratified sampling, population divided into 2 or more groups according to some characteristics. And then from each group we select the sample with the help of simple random sampling. This sampling is used when population is heterogeneous in nature. So, when population is in heterogeneous nature, we form the homogeneous group on the basis of some characteristics. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जेंडर एक करेक्टरिस्टिक्स है और इसमें ये हमारे पास मेल्स हैं येलो कलर वाले और ये सपोज फीमेल है। तो हम इसमें क्या करेंगे,
इस पॉपुलेशन को हमने दो अलग होमोजीनियस ग्रुप्स में बना लिया। एक ग्रुप हो गया आपका मेल्स का, दूसरा हो गया आपका फीमेल्स का। अब ये जो एक ग्रुप है इसमें ऑल सब्जेक्ट्स आर हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस होमोजीनियस ग्रुप इज नोन एज स्ट्रेटा। तो वन स्ट्रेटा फॉर मेल एंड वन स्ट्रेटा फॉर फीमेल, then we select the sample from these two strata with the help of simple random sampling. See, the main advantage is important for stratified sampling. The information about subgroups in the sample frame used to improve the efficiency of the sample plan. Stratified sampling major reason to use: some subgroups are more homogeneous than others, so fewer numbers are needed for those groups to obtain the same level of precision. Group comparison is the purpose of the study. Some demerits are more important in determining outcome of research interest than are others. All result in allowing separate conclusions about each of them. Next is cluster sampling. In cluster sampling, the principle of cluster sampling, the random sample of group or cluster of units. In selected cluster, all units or proportion samples unit be included. Identification of cluster, the list of all cities, village and wards of cities with their population falling in target area under the study. So, clusters form on the basis of geographical area. तो इसमें हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक लोकेलिटी है, इसमें हमने अलग अलग जोग्राफिकल बेस पर कुछ क्लस्टर्स बना लिए, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्टर 5, सेक्शन 4, these are the clusters on the basis of geographical area. Now we select the sample from any 2 or 3 select clusters. For example, we select 4 household from some section 1 and 4 from section 5. So, this is the cluster sampling. There is a difference between the strata and cluster, although strata and cluster both non-overlapping subset of the population, they differ in several ways. All strata are represented in the sample, but only a subset of cluster are in the sample. Second, with stratified sampling, the best survey results occur when elements within strata are internally homogeneous. However, with the cluster sampling, the best result occur when elements within cluster are internally heterogeneous. These are the advantage of cluster sampling. Simple as complete list of sampling units within population not required, less travel resources required. These are the two advantages of the cluster sampling. और दूसरे इसमें हमें होमोजीनियस ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे हमें स्ट्रेटा में करना था। तो क्योंकि हमें होमोजीनियस जब हम बनाते हैं तो उसमें हम किसी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर बनाते हैं, तो इसमें इन्वेस्टिगेटर को ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि वो सारी कैरेक्टरिस्टिक पॉपुलेशन की जाने। तो ये एक एडवांटेज है, जबकि स्ट्रेटिफाइड में इन्वेस्टिगेटर जो है उसको कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम होनी चाहिए। इसका यूज है, इट इज यूज स्पेशली यूजफुल फॉर डोर टू डोर पर्सनल सर्वेज, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कॉस्ट. Next, however, clustering increases sampling errors. People who live close together tend to be more similar. This is the main advantage. Now, non-probability sampling, I take an example to explain you. In non-probability sampling, we visit every household in a given street and interview the first person to answer the door. In any household with more than one occupant, and this is a non-probability sampling, because some people are more likely to answer the door. For example, unemployed person who spends most of their time at home is more likely to answer than an employed household who might be at work whenever the interval calls, and it is not practical to calculate these probability. So, in such type of situation
we apply non probability sampling, because here the investigator do not know about the probability to select a unit in a sample. And the example type of this is quota sampling. The population in quota sampling is first segmented into mutually exclusive subgroups, just as any standard just an stratified sampling. Then judgment used to select subjects or units from each segment based on a specified proportion. Each example, an interviewer may be told to sample 200 females and 300 males between the age of 45 and 60. It is the second step which makes the technique one of non probability sampling. In quota sampling, the selection of the sample is non random. So, this is the non probability sampling, and another is convenience sampling. In convenience sampling, we can select the sample according to our convenience, and in the first is quota and another is convenience sampling. This is the now I complete my lecture. Thank you.